So we are talking about fusion technology. So in case of fusion technology, we try to understand why the fusion technology required one atom bomb, because that atom bomb can generate sufficient amount of energy, which will be the guiding force, or which will be the activation energy for what? Activation energy for the fusion reaction to start. So far, the devices that show a net energy gain have not been demonstrated in labs. Till now, we didn't have the demonstrations. So an experiment at US National Ignition Facility, that is called NIF, comes close to demonstrating it. This in this lab using laser beams, because we understood, right, why we require laser beam, because that laser beam, when it will try to heat the plasma, we are trying to achieve that 10 to the power 8 centigrade, right, degree Celsius or Kelvin, you can say whatever it is. Is that clear? So with that laser beam, tiny pellets of deuterium and tritium, which has heavier isotopes of hydrogen that we already know, have been fused to form helium and release energy. So what they will do, they will release energy that is very nearly matches the amount of energy input using the lasers. That means ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହଉଛି ଏ ରିଆକ୍ସନ ହବା କଥା କଣ ଦରକାର, ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ମାନେ ଯଦି ତମେ 100 ଜୁଲ ର ଏନର୍ଜି ଦେଲ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କେତେ ହବା ଦରକାର, ମୋର ଦ୍ୟାନ 100, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ NIF ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ୟୁଜିଂ ଲେଜର ବିମ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଜର ବିମ୍ ରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ 100 ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଆଉ ଟ୍ରିଟିୟମ ଯେତେବେଳେ ହିଲିୟମ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜି କେତେ ରିଲିଜ ହଉଛି, 100 or lesser than 100. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି କମ ମିଳିଛି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯଦି କମ ମିଳୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଆୱାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ରାଇଟ୍? ଆୱାର ଗୋଲ ଇଜ ଟୁ ଗେଟ୍ ମୋର ଏନର୍ଜି। So to be functional, a reactor has to produce an output that is least tens of times of input energy. Because functional तो objective तो हमारा सही है ना, कि हमें कहीं की पढ़ुଥିଲେ fusion technology. We try to talk that this fission technology रे जदि fusion reaction रे हमें x amount रो energy पाइले, fusion रे केते हवा दरकार? Generally it is considered to be 4x times रो energy release हवा कोउथिरे ना fusion technology रे. बट आमे जतले ट्राई करूचे फ्यूजन टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट लैब सेटअप करिकी ट्राई करूचे जनरेट करिया पे, फास्ट आमे देखिले कि यूएस ट्राई कला थ्रू द NIF नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, जोथरे से माने ट्राई कले लेजर बीम रे हिट करिया पे। एंड जदि से माने 100 किलो जूल दउचंदी, देन जो आउटपुट जो एनर्जी बाहरिया कथा हीलियम फॉर्मुला बेलको हेडी बाहर छि केते 100 और लेसर देन 100. This is not our target. Our target should be the output energy should be more than 100, and it will be at least 10 times. So to be functional, the reactor has to produce output at least 10 times of the input energy. So the NIF has been trying to achieve this for nearly a decade. Last 10 वर्ष हेलानी NIF ट्राई करूची at least अधिक पाइबा पे। तो बर्तन तमे जो न्यूज गुडा देखिबो ना, एगुडा देखिबो कि किए केते जूल रो पाई पारिची। So the amount of laser energy used in this experiment is 1.9 megajoule. Use केते हितला 1.9 megajoule. Amount of fusion energy produced this experiment was approximately 1.3 megajoule. Is the objective clear? No, objective didn't achieve, right? जो टारगेट थिला हमर से टारगेट अचीव हेलानी भाई। 1.9 जूल मते एनर्जी मु अधिक देली किंतु पाइली कम, ता माने ऑलरेडी तो मो 0.6 एनर्जी लॉस हैला, हां कि नहीं? 0.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी मु केवल रिएक्शन एक्सपेरिमेंट रे लॉस कर देली, किंतु मते कथा थिला कि एक्सपेरिमेंट रो अधिक एनर्जी पाइबार थिला। सो ए न्यू रिकॉर्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, Joint European Torus, that is called JET, a fusion experiment facility in UK, set a new record for the amount of energy released in a sustained fusion reaction. They generated 59 megajoule of heat, equivalent to about 14 kg of TNT, trinitroptoluene. Okay, trinitroptoluene explosive. तो जदि ट्राइनाइट्रोटोलुएन जोड़ा TNT तमे देखितो से जो बम वगैरह यूज करन, तो 14 kg रो बम यूज लाइक TNT बम ताकू यूज करले जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी व्हिच इज अराउंड टू 59 मेगाजूल, सेटा से माने पाई पारथिले केते सेकंड रे ना 5 सेकंड ऑफ फ्यूजन, which is more than the double previous record achieved in 1997 by the same facility. This jet, a donut shaped tokamak. Okay, so here the word that has to be understood is tokamak. Fusion reactor contains plasma, which is highly ionized gas, which are heated to 150 million degrees Celsius inside a vacuum, means 10 times hotter than the center of the sun, which is 10 times hotter than the center of the sun. And here the basic concept is 1 watt equal to 1 joule per second. So generally energy रा जो SI unit वगैरह है, so joule per second, and ताकू आमे देखुचे watt रे, then kilowatt, megawatt, gigawatt. Okay, these kind of watts we used to use.
Anyway, so you understood that for fusion technology everyone is trying to achieve it, but the reactor till now reactor कथा हमें कहूने एगुड़ा हमें जस्ट कहूचे कि एक्सपेरिमेंट करिया कथा रिएक्टर कथा कहने रिएक्टर माने जोठी तमे कहउछ 700 गीगावाट ऑफ एनर्जी तुमको दबो 500 सेकंड रे और 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी दबो तुमको 400 सेकंड रे मात्र 400 सेकंड रे जोठी तमरो गोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जदि हमें देखिया फास्ट स्टेज काकरापरा राइट से केते दोची 700 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केते दोची ना 12 वर्ष रे होंगी नहीं बट एमाने मु कहउची कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी तुमको दे दो मात्र 400 सेकंड रे so this is what the power of fusion technology but here whatever we are trying to discuss in jet हे वाला या फिर NIF हे वाला से माने ट्राई को करछंदी गोटे लैब एक्सपेरिमेंट करछंदी लैब रे गोटे छोटो जिंस से माने ट्राई करछंदी कि जदी मु हीलियम बाहर करिवार अछि एनर्जी एंड ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम मु नेइची ताकू जदी मु 10 टू द पावर 8 वाला टेंपरेचर रे हीट कली बीम देली प्लाज्मा को देली देन से जो रिलीज करूची तो जेट केते पाइची ना 59 मेगा जूल ऑफ एनर्जी जोटा की around 15 kg or 14 kg of TNT. Okay, this is what we understood. This is from related to European torus. Then China's artificial sun. So you might hear about something called artificial sun. It is not like gote surya au gote se tiyari korti ta akas re. Okay, China's artificial sun broke the record for longest sustained nuclear fusion. So China's artificial sun project called EAST means experimental, again experimental, but advanced superconducting tokamak. See, a tokamak तुम एठी भी देखी दिलो. This jet is nothing but Dognot shaped tokamak means जो एटा देखा होची basically something related to donut type रो गोटे tokamak. So this whole thing is considered to be tokamak. ये जो पूरा जिनसटा तुमको देखा होची ना, this is what we call tokamak. Okay, so China also tried to do experimental advanced superconducting tokamaks. This is an advanced nuclear fusion experimental research reactor located at the Institute of Plasma Physics of Chinese Academy, which is in Hefei, China. So in January 2022, it set a world record for reaching the temperature 5 times hotter than the sun, 70 million degrees Celsius, and staying there for 17 minutes. Because of this it was in news. 17 मिनिट से माने होल्ड करके रखी देले कोन ना इंटरनल टेंपरेचर केते थिला ना 5 टाइम्स हॉटर देन द सन लगभग 70 ओके लगभग जोडी सन रहउते 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली हियर वी आर गेटिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस अर्लियर इन 2021 दिस ईस्ट had set a similar record. It ran for 101 seconds at 120 million degree Celsius. बहुत टेम्परेचर थिला एंड से टेम्परेचर केते सेकंड रहला ना 101 सेकंड बट एठी टेम्परेचर को कमे देले एंड ताको अधिक समय रखि देले. द सन स्कोर इन कंट्रास्ट reaches a temperature of 15 million degree Celsius. It brings scientists closer to realizing that their dream of creating a near unlimited source of clean energy. In 2020, South Korea's K-Star reactor set a new record by maintaining a plasma temperature of over 100 million degree Celsius for only 20 seconds. See, it is very clear now कि जिते अधिक टेम्परेचर हबो सेते कम सेकंड जाय तमे ताको रखबे भाई प्लाज्मा जिते अधिक टेम्परेचर हबो ताको जदी तमे कूल डाउन करि चललो सी सेति में तमे देखियो ना क्रायो समथिंग गोटे थिला ना इंडिया देउथिला आईटीआर पई क्रायोस्टाट करेक्ट क्रायोस्टाट जोटा कि कूलिंग पई हेल्प करबो तो जदी बर्तन 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हे गलानी दैट मींस जोटा साउथ कोरिया रे हमें देखिले केस्टार सी केते समय रख परतला मात्र 20 सेकंड जदी एठी तमे देखियो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस चाइना केते सेकंड रखला 101 किंतु जदी टेंपरेचर कमिला ताहाले सस्टेन करलुची 70 मिनिट यू अंडरस्टूड कि सेइथरु से माने दिस इज व्हाट वी कॉल चाइनाज आर्टिफिशियल सन डोंट थिंक लाइक चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सेपरेट सन इन दैट स्काई एंड ताकू नै कि से प्रोजेक्ट कर देबो सैटेलाइट रे कि चलो गोटे सन को हमें छाड़ दिलो यू अंडरस्टूड राइट व्हाट इज चाइनाज आर्टिफिशियल सन बिकॉज़ द कोर जो 70 मिनिट रो से रखिले जो लगभग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस द कोर इज कंसीडर्ड टू बी लाइक सन रो कोर रे जोटी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहउतला एठी रहउची 5 टाइम्स ऑफ कोर ऑफ द सन right that's why we are talking about that this is called the China's artificial sun